Hare Krishna. Yes, Prabhu. Now it is fine. All right. So I'm sorry for the inconvenience. So thank you very much for inviting me, and it's really a pleasure to be with all of you, all the young students, and very nice to see that so many people have joined and so many people are interested in the Krishna consciousness. So somehow, actually, because we just talked today, and the although I was told that the intent of this meeting is to basically share with all of you the experience with Krishna consciousness, and so definitely I will try to do it very shortly, and then better would be that instead of being a monologue, if it is a dialogue, then it will be more useful, so that I can also connect to all of you. Although I still feel myself young, but definitely there is a gap. So it's now 2023, and I came to IIT 23 years back and passed out 19 years back. So it will be very nice if you have any question, and I'll try my best if I can answer, if I can. Although I hope all of you are connected to sir, and so you are definitely in a very able guidance. You don't require me, but still, if I can be of any support, I will feel myself kind of. It will be a kind of. I will be able to fulfill my gratitude towards sir and whatever I have got. So very shortly, as Prabhuji has mentioned already, so currently I'm working with Siemens, and so let me tell you, if I see my life 23 years back. So 23 years back, when so my father was working in Uttar Pradesh Police. He was in police department, and I was not very good at education initially, but from 10th class onward, I became little serious because I was not very serious towards education. So I like playing more than studying. But then eventually, somehow, I cleared IIT JEE and went to IIT Kanpur. And now, if I see my 23 years of my life, and one thing which I still remember when in 2000, first time I had a very close friend of mine. His name is Harikesh Prabhu. Maybe you might have invited him or you will invite him. He is one of my best friends. I have very less friends, but those friends who are there, they are very good friends of mine. So he's one of them, and I respect him a lot because he was the one who brought me to Krishna consciousness. We were in Allahabad, Prayagraj. We used to prepare for IIT together, and so when I came to when I went to the program first time in 2000, I remember second semester it was, and so I went on Saturday. I was invited. I went there, and the program went on for around 2.5 to 3 hours, and so I was just watching my watch. I was just looking at my watch always that like 3 hours was too much for me. Two things I liked a lot. One was Kirtan, another was Prasad. Definitely at those times, the food quality in mess was not so good. Definitely it was hygienic, but definitely if you come from your home, then the the food made by mother is always better than any food. So from that perspective, I was saying that the taste was not that homely, but the prasad I took, it was very good, and Kirtan I enjoyed. So when I was leaving from the program, I was asked by a devotee that uh, आप हर सैटरडे को आइएगा, he said. हमारे यहाँ हर सैटरडे को प्रोग्राम होता है, एंड आई वेरी रिस्पेक्टफुली सेड कि मैं सैटरडे को नहीं आ पाऊंगा हर सैटरडे को, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एवरी टाइम, लाइक इट विल बी टू मच 3 आवर्स, क्योंकि उस समय लोड भी होता था. आई ऑल ऑफ यू नो दैट स्टडी प्रेशर इज देयर, एंड आई वाज नॉट वेरी मच काइंड ऑफ, सो क्लास कई बार बंक हो जाती थी. सो वी हैड टू रियली काइंड ऑफ पुट सम हार्ड वर्क एट during the weekends. Then life passed on, and after that, I don't remember I went any time. So I used to go to gym and in evening, so I didn't have time. Then 2000, I think third semester, January, Harikesh Prabhu told me that there is a professor, he has come, and he is in electrical department. I was in mechanical department, and that's how. So
So then I said, okay, let us go and meet. So he said that he's very nice professor. He's a devotee, and that's what like remember. So my brother, he's right now in the US. He works with Siemens Gamesa. So my brother was visiting me in IIT. So both of us went to meet sir. That was first time I met him. And I remember we went at around 5 o'clock, 5 p.m. And at that time, Vaishnav Prabhu was there. Now he is Vaishnav Maharaj. Some of you might have met him. He's now a sannyasi. At that time, he was in his house, and sir was taking bath. So I went and I sat there. And then I told Vaishnav Prabhu that I just said कि मुझे कई बार लगता है कि like I don't know what to do, क्या करना है, I don't remember. So I was just saying like this. I was showing as if like I am very kind of detached person. He said कि मतलब मुझे I don't want to. I said him कि मतलब लगता है सब छोड़ दें. I told him. Then he told me कि आपके पास है क्या जो आप छोड़ देंगे अभी अभी है कुछ आपके अभी डिग्री भी तो पूरी है नहीं आपके पास सेकंड ईयर में हो भी आप कुछ छोड़ने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना आपके पास यू डोंट हैव एनीथिंग देन व्हाट विल यू लीव देन I said yeah that's also correct then I just sat nicely I didn't talk to him after that and but that word was very kind of so these were few I still remember like 23 years have passed and then he said कि devotees are not they are not escapist they are like Arjun. He said, you know, in Battle of Mahabharat, who was the greatest warrior? Although people say Bhishma Pitamaha was greatest warrior, Karna was Dronachar was there. Bhishma Pitamaha had a everybody knew like he had a boon that he will die according to his will, whenever he wants to die and how he that he will choose. Dronachar, whenever if he has the bow in his hand, nobody could defeat him. Karna was like he had Kavach and Kundal, and then was Kripachar. He could not die. वो अमर हैं वो. Then was Ashwathama. He is also वो भी अमर हैं. He was those kind of warrior was there, and on another side was Krishna and Arjun. And Arjun defeated all of them. Definitely, if you go deep into the philosophy, because Lord Sri Krishna was there, that's how Arjun got Arjun won the battle. क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ धर्म होता है और भगवान जहाँ पर है वहीं पर विजय भी मिलेगी. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्मम. लास्ट वर्स ऑफ भगवद गीता. यत्र योगेश्वरः कृष्णो जहाँ भगवान श्री कृष्ण है यत्र पार्थो धनुर्धर जहाँ पार्थ धनुर्धर पार्थ हैं तत्र श्री श्री मतलब ऐश्वर्य विजयो विजय विक्ट्री ध्रुव तो वहां पर सब कुछ होगा everything will be there all the auspiciousness will be there that Sanjay says after hearing all the Bhagavad Gita so that's what he said that devotee does not mean जो मेरा पहला इंप्रेशन था जब व्हेन आई केम टू डिवोशन मुझे ऐसा लगा कि डिवोटी का मतलब हो गया कि बिकॉज आई वांटेड टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर तो आई वांटेड टू काइंड ऑफ लुक लाइक स्ट्रांग एंड तो मुझे लगा डिवोटीज मतलब लाइक एवरी वेरी हम्बल तो थोड़ा पर्सनालिटी में सूट नहीं करेगा मुझे लगता था दैट्स व्हाट आई थॉट बट देन व्हेन वैष्णव प्रभु सेड दैट devotee is not like that arjun was a devotee he was the only warrior who had all the weapons he was the only warrior in mahabharat who had pashupatastra nobody else had pashupatastra and when lord shiva gave pashupatastra to arjun he said that nobody even the demigods cannot bear the power of this pashupatastra you are the only one who can bear it that's why I'm giving it to you he said devotees are like that and so I liked that point so that actually suited to my thinking process that devotees are also powerful they are also kind of वो भी वीर होते हैं they are not like only material people are not like that so there was a little bit of paradigm shift for me then I met sir and then so first meeting went on for 7 hours I had a discussion with sir and we started and then I had my own way of spirituality my own thinking about spirituality lord shiva lord mother durga hanumanji so and then when I met sir and then we started having discussion then so all so whatever logic he was putting that was complete against my my upbringing or my thinking process about spirituality what he was saying it was completely different but out of respect for him and Vaishnav Prabhu I did not say anything I put lot of questions he answered all the questions logically and because I could not
put any logic, so I accepted that. Okay, so at that time I was mentally defeated, and but I was mentally defeated. But at the same time, from the heart, I also got defeated because I felt a lot of respect towards both of them. Although they were very, at least I could feel the difference when I was talking to sir. Now he's very busy. Now he's director of IIT Mandi. At that time he was very free, so we used to talk with him. Like I remember there were days like after 1 o'clock I used to take lunch and then I used to go to sir and then he used to read Bhagavatam with me for 1 to 4 hours. We'll just sit with him. He will share with his own personal thinking. Then, so in that sense, I was very fortunate. So was the point I was making? Like this was the first meeting with sir, and then life went on. So when I started going, then Radhakant Prabhu started coming, and then Ranjan Prabhu started coming, and then Harikesh Prabhu was there, Shashi Shankar Prabhu. So many devotees then started coming, and slowly, group started because it was his purity. So automatically, if purity is there, then people will come. It is not only by his mental things; it was his purity. That's why people came, and then things started becoming bigger and bigger. And then, so whenever program used to happen, I always used to think that maybe I don't know, am I doing right thing? My friends are studying and they are getting good grades. What will happen to me? Whether I'll get job or not? I am engaging here. So this thing was always coming in my mind. But when I see now, I'm coming to the point. What point I wanted to make or I wanted to start. So first I was making some मैं भूमिका बना रहा था. So now if I see my from 2000 till 2023 and life before 2000 also, I feel myself very fortunate. And it is not that I have done something. So I have my friends who are living in US. I have my friends who are IAS officers, IPS officers, IRS officers. So many people are there. And by God's grace, by devotees' blessings, my parents' blessings, I also, at least I achieved something. But now if I start comparing the life, they are also married, I am also married. They have kids, I have kids. They are doing job, I am doing job. But one very special thing which I have got is, although I am not very elevated in devotion, yet still I have to do a lot. But I know that wo, what the thing which I have got, the kind of trust that now I see when I talk to my friends, if they get posting somewhere, their IPS officer, if they got don't get posting, they say, यार अभी posting खराब मिल गई मुझे. Sometimes everybody is very much afraid. थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, क्या होगा? इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, क्या होगा? जॉब चली जाएगी, क्या होगा? What will happen? I have home loan, I have car loan, I have this loan, that loan. So, but so one thing which if I compare with myself, मैं बहुत बड़ा संत नहीं हूँ, but मेरे अंदर एक वो है, मतलब आई फील कॉन्फिडेंट कि ठीक है, भगवान है अभी, भगवान है, गुरु महाराज हैं, अगर उनके आदेशों का पालन करेंगे, वो जो शास्त्रों में जो भरोसा है, वो आपको एक जीवन जीने का आधार देगा. दिस इज व्हाट आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो. कई बार आप हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि जन्म से तो मतलब हिंदी है मातृभाषा. तो दैट ट्रस्ट is this is the wealth I have acquired in last 23 years, which when I see with my friends, they don't have. With all due respect to them, they are also professionally very qualified. Some are more qualified than me. There are many who are more qualified than me. They are more richer than me. But when it comes to, क्योंकि एक दिन देखिए हर व्यक्ति को मरना है, आप ध्यान रखिएगा. एक दिन everybody will die. Just few days back I got a registry. मैंने एक जमीन खरीदी, तो मैं रजिस्ट्री कराने गया. तो it was agricultural land I purchased. So, and I was just signed. You have to make a lot of signatures while when you do registry, like 30-40 signature करने होते हैं आपको. Then you put a lot of stamp and thumb impression. So I was just doing it. तो I was just reading. तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे तो कोई भी लैंड होता है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है उसके पास कि ये लैंड पहले किसकी थी, फिर किसकी थी. वो लिखते हैं कि इसका नाम काट के इसका लिख दिया गया, फिर ऐसा हो गया. I was just going through since last maybe 50-60 years. I was looking at the history of that land.
इट वाज सेइंग कि इनका नाम काट के इसका लिखा गया, इनका नाम काट के इसका लिखा गया, इनका नाम काट के इसका लिखा गया। अब मेरे में आ गया कि इनका नाम कट के राम बहादुर सिंह का नाम लिख गया। तो मैं देख रहा था कि लैंड वहीं पर है, सबके नाम लिखे गए, बाद में जो मरता गया उसके नाम कटते गए, दूसरे के उनके पुत्र के नाम आ गया, किसी ने खरीद ली उसके आ गए, अब मेरा आ गया है। तो ये चल रहा है, लैंड वहीं का वहीं है। उसके पहले देखा जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई हमारे यहाँ की रानी थी, तो हो सकता है उनके यहाँ वहाँ का लैंड होगा, अंग्रेजों ने वहाँ पे कब्जा किया होगा। तो सब कुछ यहीं है, हम जितना भी पैसा कमाएंगे ना, सब कुछ यहीं रहेगा। और अभी 7 दिन पहले की बात है, जब मैं गांव से लौटा रजिस्ट्री करा के, तो मैं बस ऑफिस से वापस आ रहा था, तो आई जस्ट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, एंड देन फोर फोर ओल्ड men were coming from the front, and they were in their 70s, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इनकी संपत्ति क्या है, इनके पास क्या संपत्ति है आज। अगर इनका शरीर देखें, हो सकता है ये पहले पहलवान रहे होंगे, आज शरीर भी साथ नहीं दे रहा, किसी घुटने दर्द कर रहे हैं, कोई चल नहीं पा रहा, अभी दौड़ने को बोल दिया सब हाँफ जाएंगे। शारीरिक संपत्ति भी नहीं है उनके पास। जो भी जमीन होगी, वो अभी थोड़े दिन बाद उनका नाम कटने वाला है, वहां से बेटों का आने वाला है कुछ दिन बाद, वो भी चला जाएगा। जो घर होगा वो बेटों ने ले लिया होगा, बैंक अकाउंट है वो भी चला जाएगा। तो असली संपत्ति इनके पास है क्या आज? इनके पास सिर्फ एक संपत्ति है, वो संपत्ति ये है कि अगर उन्होंने स्पिरिचुअल कुछ किया होगा, बस वही जाता है साथ में, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स हियर। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि द बिगेस्ट वेल्थ which we will really earn, which will go after our death into the second birth and birth after that, is our devotion. ये अकाउंट कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई चपरासी के यहाँ जन्म लेता है, कोई प्रधानमंत्री के यहाँ जन्म लेता है, कोई गरीब। although I am not discriminating prime minister and chaprasi, both are equally good, but I am just saying from the perspective of material world, कोई अंधा पैदा होता है, कोई बहुत शक्तिशाली पैदा होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई बहुत ज्ञानी पैदा होता है। देयर इज समथिंग t इक्वल टू टी नॉट, हम पढ़ते हैं इनिशियल कंडीशन, राइट? we say what we say, ft equal to m d2 x over dt square, then we say x is equal to double integral of ft dt, right? Then we say if I know the initial condition and if I know the force, then I can find out the condition of the body at any time t, if I know the forcing function by the integration of that. So at t equal to t naught, that condition who is determining? I didn't determine it. Who determined that? मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं किसके यहाँ जन्म लूंगा? आई कैन नॉट डू दैट। ओनली गॉड कैन डिसाइड, ही डिसाइड्स हिज पेरेंट्स। तो ये जो संपत्ति हम अर्न करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, मतलब मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ, बट आई वाज थिंकिंग मैं ये नहीं बोलूंगा, बट स्टिल कि अभी आप लोग बच्चे हैं, अभी आप लोग, अभी आपकी प्रायोरिटी शायद होंगी कि अभी अगले सेमेस्टर में मेरे सीपीआई अच्छी आ जाए, राइट? सीपीआई 10 आ जाए, 10 पॉइंटर बन जाऊँ, पीजीएम मिल जाए मुझे, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिल जाए, फिर उसके बाद यूएस में एडमिशन हो जाए, 4 पॉइंटर बन जाऊँ। तो ये अभी आपकी ये प्रायोरिटी है। बस 4 साल बाद प्रायोरिटी क्या होगी? एक जॉब मिल जाए अच्छी, बढ़िया जॉब मिल जाए कहीं भी, जो सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे सिविल सर्विस में हो जाए, या फिर कैट में हो जाए, जीमेट में हो जाए, या जॉब मिल जाए, वट एवर। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द प्रायोरिटी? फिर जॉब में क्या है, प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, घर लेना है, कार लेना है, ये लेना वो लेना, ये होगी, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, सब। फिर क्या होगा? शादी होगी। जब शादी होगी ना, तो फिर आपकी प्रायोरिटी थोड़ी चेंज होगी वहां पर। हर समय चेंज हो रही है। अभी अभी स्टडी है, अभी मार्क्स हैं, फिर मनी हो जाएगी। जब शादी होगी ना, फिर आपको लगेगा यार शादी हो गई, अभी वाइफ है, मुझे थोड़ा सा ना अभी आई हैव टू टेक केयर ऑफ वाइफ। फिर बच्चा होगा, तो उसके बाद क्या होगा ना, आपके डिसीजन बदलने लगेंगे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं आप कोई लोग यूएस जाते हैं जब, तो यूएस जाने के लिए लोग तैयारी करते हैं, मतलब 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले कम से कम तैयारी करते हैं लोग। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यूएस ऐसे जाता था कि मैं 8 बजे ऑफिस से आया, मेरी फ्लाइट है रात को 1 बजे, और फटाफट कपड़े फेंके फ्लाइट में, सूटकेस बंद किया, भागे लेके। एक बार मतलब लिटरली मैं दौड़ के फ्लाइट पकड़ी थी, जैसे आदमी ट्रेन पकड़ता है, वैसे जाता था यूएस। 3 महीने के लिए गए, 6 महीने चले आए। अभी क्या है, अभी बैंगलोर आना था ना मुझे 3 दिन के लिए, तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था 3 दिन के लिए जाऊं कि 4 दिन के लिए जाऊं। ऑफिस वाले बोल रहे थे यार 4 दिन के लिए जाना है, मैंने कहा नहीं, मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा। मैंने कहा मैं तो आ जाऊंगा सैटरडे को, मैं संडे को नहीं रुकूंगा। बिकॉज नाउ फॉर मी इज इम्पोर्टेंट कि अभी मदर है वहाँ पर, वाइफ है, बच्चा है, तो अभी ऐसा ना उन लोगों को जरूरत पड़े मैं यहाँ बैठा हूँ। तो जाने के पहले मैंने पूरी शॉपिंग करी कि भैया सब कुछ होना चाहिए। सो इसकी प्रायोरिटी चेंज्ड। अभी हो सकता है मुझे बैंगलोर में नौकरी और अच्छी मिल जाएगी, मुझे हो सकता है डबल सैलरी मिल जाए, लेकिन मेरे लिए दिल्ली ठीक है, क्योंकि घर के पास है वो।
So now your priorities will change now. So now your decisions will basically, so every time as you will progress in your life, your priorities will change. अभी आपको लगेगा यार ऐसा क्या है, मतलब जाने में क्या है, मतलब चले जाओ 4 दिन 5 दिन, but the mental state I am in, हो सकता है you might not able to perceive that. और यही एक 70 साल का आदमी जिस मेंटल स्टेट में होता है उसको मैं परसीव नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो आपको पता है सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति कौन होता है? सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है जो अपनी एडवांस की मेंटल स्टेट को परसीव कर सकता है। ही इज द मोस्ट, ही इज द सक्सेसफुल पर्सन। और सबसे सक्सेसफुल पर्सन कौन है? आप इसको थोड़ा एक्सैगरेट करके बता सकते हैं? who will get the maximum success in life according to this analogy? जैसे मैंने बोला कि सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि आप फ्यूचर को कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हो अपने। तो सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति कौन होगा फिर उसमें, उस हिसाब से, इस एनालॉजी के हिसाब से? मैं देखूं आपको कितना समझ में आ रहा है मेरी बातें। एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन? संत। प्लीज गो अहेड। somebody was saying something. The saints, saintly people. So what is that? Why are they? So the biggest successful person would be if the person is able to predict his death. यार मरेंगे तब क्या होगा? अगर आज मैं 30 साल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि यार 3 साल, जैसे लोग सेविंग करते हैं ना, यार 10 साल बाद मुझे ये लेना है तो अभी से सेविंग करूंगा। कई लोग होते हैं सेविंग ही नहीं करते, 10 साल बाद कहते हैं अरे मैंने सेविंग ही नहीं कर पाई। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 साल बाद सेविंग करी होगी वो बता रहे मेरे पास तो बहुत बड़ा वेल्थ है। अब कोई व्यक्ति है वो 40 साल बाद की सेविंग करता है, वो कहता है मुझे 40 साल बाद ये करना है। तो देयर आर पीपल हु आर डूइंग सेविंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर करियर। तो वास्तव में सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी वो है वो जो अपनी डेथ की प्रिपरेशन करता है, जो वास्तव में, बिकॉज ही शुड एबल टू प्रिपेयर कि उस समय क्या होगा मेरा, उस समय मुझे साथ क्या क्या होगा, उसके लिए क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं कि नहीं हूं। दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ लाइफ, बट दैट डज नॉट मीन, आई वुड लाइक टू पुट अ कैवियट हियर, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल बिकम एस्केपिस्ट, यू विल बिकम पेसिमिस्ट। अरे यार मरना ही है तो अब क्या है, मरना ही है मतलब चलो ठीक है मरना ही है तो क्या करें, जब मरना ही है तो मैं क्यों खाना खाऊं, मरना ही है तो क्या करूं मैं क्यों नौकरी करूं, मरना ही है मैं क्यों शादी करूं, मरना ही है सब। ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट what you will get if you really follow this path nicely, and it is not my experience, I have talked to many people who are better than me on this path, and everybody says this, that it will give you a balanced life. You will be, you see, our life has various dimensions. हमारी लाइफ की बहुत डायमेंशन होती हैं। एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है फैमिली, हमारा कैरियर, so many, and then there is a spiritual spirit, a spiritual dimension is there, so many dimensions are there. जैसे आपने चाणक्य की बात सुनी होगी, चाणक्य ने बोला है कि हम लोगों को, आई थिंक मैं मुझे पूरा स्टेटमेंट याद नहीं है, बट उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि हम लोगों को कठिन समय के लिए पैसे बचाने चाहिए, कठिन समय के लिए पैसे बचाने चाहिए। और मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि फिर वो बोलते हैं कि परिवार के लिए आपको अपना त्याग भी करना पड़े तो ठीक है, अपने परिवार के लिए, और देश के लिए अगर आपको परिवार का त्याग करना पड़े तो ठीक है, और समाज के लिए देश का भी त्याग करना पड़े ठीक है। फिर बोलते हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए आपको सबका त्याग करना पड़े वो भी ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप जाकर सब लोग सन्यासी बन जाओ, ऐसा हो भी नहीं पाएगा। वी विल नॉट बी, वी आर नॉट दैट क्वालिफाइड। सो अ डिवोटी इज लाइक अर्जुन, he is a warrior. This life is actually a battle. Battle does not mean that we have to be always with gun. We are having mental battle, we are having emotional battle, you are having educational battle, right? You have a competition, right? Everybody wants to get better CPI and all those things. Then so we are fighting battles on various dimensions, and this spiritual life will give us wisdom. It will basically give us ability to stand in front of all the adversities of the life. Believe me, अभी आप लोगों को रियल लाइफ का वो नहीं पता है। लाइफ इज वेरी टफ एक्चुअली, एंड इट इज वेरी क्रूअल इन सम सेंस। आई रिमेंबर जब मैं यूएस में था, यूएस से वापस आया था मैं, तो मैं अपने मेरा मेरा कुछ मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना था बैंक में, बैंक से, तो मेरे पास पैसे उस समय मेरे ट्रांसफ़र नहीं हुए थे।
और मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था, मैं कहीं पर था, मैं पढ़ाता था, तो मेरे पास 10 रुपए थे मेरे पास सिर्फ। आई हैड ओनली 10 रुपीज एंड मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना था। मैं एक मंदिर में रुका हुआ था, वहाँ जाना था मुझे। मुझे बड़ी भूख लगी थी, मुझे शाम के 7 बजे थे और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए थे। और जब 7 बजे थे तो मेरे पास जब उसमें मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन मुझे पता था कि वो ऑटो वहाँ से वहाँ तक मंदिर तक का 10 रुपये लगता है। मुझे समझ में आया क्या करें यार, खाना खाएं कि ऑटो से जाएं, 10 रुपये का समोसा ही खा लेते हैं। देन दैट डे एक्चुअली आई रियलाइज्ड कि जो जिसके पास पैसे नहीं होते हैं ना, मतलब आप जब घर के बाहर निकलते हैं और अगर आपको कहीं जाना भी है ना, दिस मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज समथिंग। So what I want to say, this word is very, it will test you at every stage of life. अभी सिर्फ आपका टेस्ट होता है एग्जाम में, और जब आईटी के बाहर निकलेंगे तो आपका टेस्ट हर जगह होगा। एम्प्लॉयर भी टेस्ट करेगा आपको, आपकी फैमिली भी टेस्ट करेगी, राइट? एवरीबडी विल टेस्ट यू एंड एवरीबडी विल गिव यू सम challenges. And to face those challenges, only money is not enough. Believe me, money is not everything. With that money only you won't be able to face that, that the knowledge is actually everything. अगर आपके पास ज्ञान है तो आप किसी भी एडवर्सिटी को बड़े पीसफुली आप फेस कर सकते हैं, बड़े पीसफुली फेस कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 4 साल हमने आईआईटी में बिताए थे सर के साथ में, सर के संग में, सर के मार्गदर्शन में, सर की और माता जी के मार्गदर्शन में, तो उससे एक ये चीज़ सीखने को मिली। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे भक्तों का संग करते रहे, तो अभी भी हम लोग वी आर स्टिल ट्राइंग टू, आई एम, मतलब मैं तो कर ही रहा हूँ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू कोप अप। There are many serious devotees like Harikesh Prabhu, Radhakant Prabhu. They are doing very good, and I'm still learning. So I will say take up this seriously. And as I said, there are very small things like simple thing. हमारे मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमको लगता है कि वीकेंड पे पढ़ लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट अगर आप एक बैलेंस लाइफ जीते हैं, आप जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, आप थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपकी एबिलिटी हो, जो भी टाइम हो, और फिर उसके बाद आप इफ़ यू स्टार्ट लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ, जो कि आपने देखा होगा जनरली आईटीज में नहीं रहते हैं लोग। आईटी में कोई ऐसी लाइफ बोले तो उसको मतलब मग्गू बोलते हैं, राइट? मग्गा मारता रहता है, मग्गू है, किताबी कीड़ा है, तो स्मार्ट बंदा नहीं है ये। बट ऐसा नहीं है। एवरी डे you will live like that, you will grow, you will grow physically, you will grow mentally, you will grow in character, you will grow in your knowledge, everything. And day by day by day by day, जब आपके 4 साल के बाद जब आप निकलोगे ना, you will be a different person. और कई बार मैंने मैंने ऐसा भी देखा है, कई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जब एडवर्सिटीज आती है ना, तो बिल्कुल जैसे सूखा पत्ता होता है ना, सूखा पेड़, सूखे पत्ते वाला पेड़, उसकी तरह बिल्कुल वो हिल जाते हैं पूरा, रियली। क्योंकि उनके पास वो चीज़ें नहीं है। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यद्यपि हमारी मेंटल स्टेट वहाँ नहीं है, बट हमको पता है कि ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे भक्त हैं जिनके पास हम जा सकते हैं, वो हमें मार्गदर्शन दे देंगे। तो हमने ये वेल्थ गेन किया है। तो अगर हम वास्तव में इस बात को सीरियसली लेते हैं, देन देयर इज नो लॉस इन इट। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, दैट नेवर एवर ट्राई टू फॉलो थिंग्स सेंटिमेंटली। रीड द बुक्स, knowledge is everything actually. Srila Prabhupada has wrote a lot of books, and even if you don't see it as a from the sentimental perspective, even if you see those books very logically, then also you will see that those are the one of the biggest treasures India is having. तो अगर आप उनको पढ़ते हैं अच्छी तरह से, try to understand the philosophy, try to understand, this is very very important. Srila Prabhupada used to say that doing without knowledge is called mental, it is called fanaticism, and only knowledge without doing is called mental speculation. So both are not good. So we have to practice, but then we have to also understand this why, how, what. These are very important questions. You should always ask. Don't take just devotionals, or don't take to this just sentimentally. That emotions are at the end. Sentiment is everything. मतलब श्रीमती राधा रानी का सेंटिमेंट ही है, मतलब
यद्यपि मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ उनके बारे में बोलने के लिए, बट आप देखें तो भगवान के भक्त हैं, अंततः क्या है, उनके पास सेंटीमेंट्स ही है ना, बट वो सेंटीमेंट वो पके फल के समान है जिसको ज्ञान की धूप में खूब पकाया गया है, तो वो सेंटीमेंट्स हैं वो। तो जो जो धूप है वो क्या है, वो ज्ञान की धूप है, वो हमारा तप है, हमारा जप है, हमारी प्रैक्टिस है। बट हमारा 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 जैसे अभी बोल, लाइक यू से आप चैंट एंड बी हैप्पी, राइट, पीपल से चैंट एंड बी हैप्पी, या चैंट 16 राउंड बी हैप्पी, टेक प्रसाद एंड बी हैप्पी। तो कई बार लगता है यार ये क्या है, मतलब चैंटिंग बी हैप्पी, टेक प्रसाद बी हैप्पी, कैसे बी हैप्पी हो जाएंगे टेक प्रसाद लेके? मुझे नहीं समझ में आता था, बिलीव में, प्रसाद लेके हैप्पी कैसे हो जाऊंगा मैं, मतलब वाई, प्रसाद पेट भर जाएगा तो हैप्पी कैसे हो गया? बट अभी समझ में आता है मुझे, अभी मुझे बिल्कुल समझ में आता है क्यों, क्यों प्रसाद लेके हैप्पी होना है, क्यों होंगे हम। अभी ये समझ में आता है कि प्रसाद नहीं लेंगे तो हैप्पी क्यों नहीं होंगे, प्रसाद लेके हैप्पी क्यों होंगे। अगर उस प्रसाद में मिर्च ज्यादा भी डली होगी तो उसको खा के भी हैप्पी होंगे, और होटल का खाना बिना बहुत टेस्टी होगा तो उसको खा के भी हैप्पी नहीं होंगे। तो अगेन इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स रियलाइजेशन। स्लोली स्लोली आपको सब समझ में आएगा। अभी बोला कि गुरु के वाक्य मानोगे सब हो जाएगा, आपको लगे ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मन में, मेरे आते थे, अभी समझ में आता है कि जब ये बोला जाता है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कोरिया आय क्या, एक आप लोगों ने शायद सुना होगा, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, आर न करिया मने आशा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कोरिया आय क्या, आर न करिया मने आशा। जैसे मुझे याद है एक हमारे सीनियर भक्त होते थे, हमारे मार्गदर्शक थे वो, तो मैं यूएस में था, तो मैं हमेशा बोलता था प्रभु जी मुझे कुछ करना है जीवन में, तो लेकिन मैं उनकी बात भी मानता था। तो कहते थे प्रभु जी आपका क्या है ना कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया आज्ञा, आर भी करिया मने आशा। आपका ये नहीं है कि आर ना करिए मने आशा, आप और भी आशाएं बहुत करते हो आप। देन सो नाउ, तो वो सब लाइंस है मुझे अभी समझ में आती हैं कि वाई दिस इज वाई गुरु इज इंपॉर्टेंट। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इट विल टेक लाइक रात बीत जाएगी बात करते करते। बट दीज आर लाइक, ये जो होते हैं ना, जैसे फिजिक्स की थ्योरम्स, मैथ की थ्योरम्स होती है ना, प्राइम नंबर की थ्योरम, ये मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड, मैथ में कुछ होती हैं, देयर आर सम, आई फॉरगॉट, उसकी थे कुछ बोलते हैं, आई फॉरगॉट, कि उसका प्रूफ नहीं होता है, बट नहीं भी, बट दे आर द थिंग विच यू टेक इट। तो सिमिलरली दीज लाइंस आर वेरी पावरफुल लाइन। तो वहां पर जो बोला गया चैंट एंड बी हैप्पी, दोस थिंग्स आर, इनके पीछे पूरी फिलोसफी है। क्यों क्यों भगवान का नाम हमें क्यों सुख कर देगा, क्यों सुख मिल जाएगा हमको? अगर आप कर्म के सिद्धांत पे जाते हैं कि प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध वो कर्म है जो कि तीर से छूटा हुआ बाण है। भाई जब तक तीर मैं लिए हुए हूं, मैं छोड़ू नहीं, तब तक तो मैं तीर को रख सकता हूँ, राइट? एक बार तीर निकल गया तो निकल गया, फिर तो लगेगा ही आपको आगे। अब मैं मान लीजिए मैंने तीर छोड़ दिया, अब आप मुझसे बोलोगे तीर रोक लीजिए ना, मैं थोड़ा रोक पाऊंगा। अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि भैया मुझसे तो छूट ही गया, आप बच लो, आप बचो बचो किसी तरह से, या तो झुक जाओ या अपने सामने कुछ लगा लो, राइट, ढाल लगा लो अपने आगे, तीर लड़के निकल जाएगा। तो जो प्रारब्ध, जो हमारे कर्म होते हैं, ये वो कर्म है जो निकल चुके हैं तीर, उनका फल इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा हमको। वो तीर आ रहे हैं हमारी तरफ, आएंगे। हरिनाम उस ढाल के समान है ना, जो उन तीरों को रोक लेगा। या फिर वो तीर पता चला बिल्कुल छाती को निकल के पार निकलने वाला होगा, वो थोड़ा सा लगेगा बस वहीं गिर पड़ेगा। ये ताकत है हरिनाम। अभी उस वक्त आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवर फिलोसफी इज वेरी पावरफुल। हमारी जो वैदिक सिद्धांत है, आज अगर आप बात करें तो चाहे आप हमारे देश की बात करें, चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ अवर स्क्रिप्चर्स। तो ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। और आप लोग क्या है, यू आर मेंटली क्वालिफाइड टू गो इनटू दोस डेप्थ ऑफ दोस ओशियन वेयर यू विल गेट द पर्ल, राइट? ओशियन में ऐसे आप गोता लगाते रहें कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको मोती चाहिए तो नीचे कूदना पड़ेगा और थोड़ा गोता लंबा लगाना पड़ेगा आपको, राइट? यू हैव टू गो रियली डीप इनटू द ओशियन, देन यू गेट द पर्ल। Similarly, our Vedic literature is like ocean. If you really go deep, you will get the pearl of those wisdoms, and which will make you powerful. Believe me, आपका आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मनी, आपकी जान पहचान, आपका ज्ञान, आपकी जॉब, ये बचा नहीं पाएगी जब रियल वो आएंगे, लेकिन भगवान का नाम बचा लेगा।
अब आप कहोगे इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। जैसे बोलो रसगुल्ले का स्वाद बताओ कैसा है, मैं थोड़ा बताऊंगा रसगुल्ले के स्वाद, मैं कहूँ खा के देखो कैसा है, मैं बोलूँगा मीठा है, आप बोलोगे अच्छा चीनी की तरह मीठा है, मतलब चीनी की तरह मीठा नहीं है, मीठा है। अच्छा बेसन के लड्डू की तरह है क्या? नहीं नहीं, रसगुल्ले का अलग होता है स्वाद। So how will I tell you? Then you eat it and then you feel the taste. That is how similarly is our realization. Now if you tell me kaise, I cannot tell you. You have to walk, then you get it. So it's really kind of ये आपका बड़ा सौभाग्य है, और मेरा भी सौभाग्य था, कई लोगों का सौभाग्य था. There are some nice devotees who came up out of IITs, and the thing is that do whatever you want. Like nobody is stopping you to study, and all those things will be there. And I think you will become better human. Academically also you will become better. So please take this, and but I will say my advice will be that please read the books, understand it logically, get all your doubts clear, ask how, why, what. These questions will always be asked: why, how, and what. So when and once you ask this question in proper mood, you will get all the answers, and then I think those will help you a lot in your life. So I will stop myself here. I don't want to speak too much, क्योंकि आप लोग I think you get many already, you are in very good guidance. So if you have any question, I'll be very happy to answer. Thanks a lot, Prabhu. It was really inspiring, like how Harikish Prabhu brought you. And initially, you were very reluctant, like 3 hours you cannot spend. But now, like, you're inspiring so many people, and and your interaction with Vaishnav Maharaj, how he told you that we don't have anything, but we think like we have so many things, and we should be like Arjuna, like a warrior. And Yeah, you told like how our priorities change over the life. Initially, we have some priority as a student, and then when we progress in our life, then our priorities get changed. And like to be the who is the best person is the one who can see his future, like, but the one who can see like how he can prepare for his death is the best person. And like you shared that monies and your body, and these are not everything. Like the knowledge is the most important thing that everyone should endeavor for. Spiritual knowledge we should endeavor to get it, and that is why we should read Prabhupada books and Bhagavad Gita regularly. So like if you have any question, you can unmute and ask. all right. So thank you very much for everyone for your time, and I wish you best of luck. And Prabhu, like I have a short question. please, Prabhuji, I have heard that you have a very nice farm in Jhansi. Can you please share something about it? It will be really inspiring. yeah, right now I am basically in the process of basically building it, because at least as I said, since last 19 years, this is what I have learned, that uh, specifically COVID period has taught us that real wealth is not your money or your car or your flat or your house. This is not real wealth. I could see during COVID period, I was in my village, and the place where I live, there people lived like 6 months to 1 year in flat, and no children came out of the flat for 6 months. They were locked completely. And but when I was in my village, we were just every day I was going for walk for 5 kilometer, even the peak COVID period, because my village is actually 10 kilometers from the road. It's in the jungle, so nobody was there, and forget about corona and anything. So because there was no interaction with the society, and so normally चीजें हो रही थी, agriculture हो रही थी, we got the grains and everything. We didn't have to go to village to city to buy anything. सब्जियां भी होती थी गांव में. Then I realized कि जो real wealth है वास्तव में is agriculture. और एट द एंड आप कितने भी पैसे कमाएं, आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा. खाने में तो आप अनाज ही खाएंगे ना. ऐसा तो नहीं कि हम नोट खा लेंगे अपने, ऐसा नहीं होता ना कि यूएस वाला डॉलर खाएगा, यूरोप वाला यूरो खाएगा, ऐसा नहीं होता. एट द एंड वी नीड ग्रेन्स. सो
that inspired me and still inspiring me. I am still not able to do, but I think I want to. So this is what I'm trying to do. Just purchase some land. This year I have started doing the organic farming. So, and believe me, this itself is a big topic. Believe me, it's a huge topic. जैसे मैंने कहा ना, प्रायोरिटीज बदलती हैं। अभी आपकी क्या बोलते हैं कि जठराग्नि बहुत तीव्र है, राइट? यू कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। जैसे ही आप 45 के ऊपर जाएंगे, देन यू स्टार्ट फीलिंग यार पेस्टिसाइड खाते हैं तो भैया नॉट गुड। एंड बिलीव मी, एनीथिंग यू आर ईटिंग, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट बिना पेस्टिसाइड के कुछ नहीं मिलता है। आप जितने भी पैक्ड, आप जितना भी आटा खाते हैं, जितने भी चावल खा रहे हैं, चावल में भर भर के पेस्टिसाइड होते हैं। ये बोला जाता है कि जो चावल बनाया जाता है उसको कम से कम 10 बार धोना चाहिए, कम से कम। एक आर्सेनिक होता है, हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें एक आर्सेनिक मेटल होता है। वो चावल जो होता है सबसे ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करता है, आर्सेनिक को, सारी फसलों में, और इट कॉजेज कैंसर। तो तो चावल को अगर बाजार से खरीदा है तो कम से कम 10 बार धोना चाहिए। अब कौन धोता है 10 बार? गेहूँ जो हम लोग पैक्ड गेहूँ खरीदते हैं, अगर आप इसको देखेंगे, ये अगर आप ध्यान रखें, हमारी माएँ पहले जो बनाती थी, आपने देखा होगा कि जैसे हमारी मदर बना, अभी अभी तो नहीं बनाती हैं, लेकिन पहले वो पहले गेहूँ धोती थी, फिर सुखाती थी। वो धोया क्यों जाता था गेहूँ? क्योंकि वो कई बार पेस्टिसाइड मिला रहता है उसमें। अभी मेरे एक रिलेशन में है, वो पेस्टिसाइड ही बेचते हैं। वो बता रहे थे कि एक येलो ग्रेड का पेस्टिसाइड होता है, एक ऑरेंज ग्रेड का होता है, एक रेड ग्रेड का होता है। रेड ग्रेड का पैसे यूज नहीं किया था, इट्स वेरी पॉइजनस। इस समय हम लोग रेड ग्रेड का पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं कीटाणुओं को मारने के लिए गेहूं में। जो जिससे आटा बनता है, उसमें एक अमोनियम सल्फाइड या कुछ था, इट्स फ्यूमिंग एजेंट। उसकी जो फ्यूम्स होती हैं वो इतनी जहरीली होती हैं कि अगर आप इस रूम में रख देंगे ना तो एक भी कीड़ा नहीं आएगा उस रूम में, इतनी खतरनाक होती हैं। तो हम लोग वो खा रहे हैं। आप जितनी सब्जियां जानते हैं उनमें स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड को। तो हम पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी सीपीआई ला रहे हैं, राइट? हम गैस टरबाइन डिजाइन कर रहे हैं, कंबस्शन डिजाइन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पेट में जो जा रहा है वो पेस्टिसाइड जा रहा है। क्या फायदा? मतलब हमसे बड़ा मूर्ख है कोई? पढ़ा लिखे गवार है, मतलब हम लोग लिटरली, हम लोग मूर्ख हैं एक्चुअली, पढ़े लिखे। बीटेक आईआईटी कानपुर में एक नंबर के मूर्ख हैं, खा क्या रहे हैं ये। बट अगर आप देखिए तो, चाहे आप तेल देख लीजिए, आप घी देखिए, क्या खा रहे हैं? अगेन, आप लोगों को अभी शायद नहीं लगेगा, अभी लगेगा अरे ठीक है ना, सब डाइजेस्ट हो जाता है, क्या प्रॉब्लम। लेकिन जब 35-40 के ऊपर आएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, समझ में आएगा अरे ये क्या हो गया। लाइक देयर आर पीपल 40 years दे आर डाइंग। अभी एक बंदा कोई सीईओ था किसी कंपनी का, ही डाइड, ही वाज ऑन रनिंग एंड ट्रेडमिल और जस्ट डाइड 40 years or something like that. He had one daughter, and so why? Because these are very big problem actually. अगेन, मतलब मैं इसमें भाषण दे सकता हूँ आप लोगों को 2 घंटे बट आई नो मे बी आप लोगों के पास टाइम कम होगा, बट दीज आर वेरी, दिस इज बिगेस्ट डेंजर। प्रभुपाद बोलते थे, शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि इफ यू रियली वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, अगर आपके पास 2 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ प्रभुपाद बोलते थे एक काऊ है, यू कैन लिव पीसफुल लाइफ। बट सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ, एटलीस्ट। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं है कि इट इज अ नीड, एक्चुअली इट इज नीड ऑफ द आवर। मैं आज भी मेरा गांव अपने घर से 600 किलोमीटर है, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, मैं सारा अनाज लेके आता हूँ गाड़ी में लाद के, पूरा सब कुछ लेके आता हूँ। बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ, आप अगर उसको अगर इमरजेंसी बोले तो ये कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा। इट विल नॉट बी समथिंग लाइक कि आई एम जस्ट सेइंग समथिंग, इट्स रियली डेंजरस एक्चुअली। सो दैट एक्चुअली मोटिवेटेड मी। तो अभी मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू इट कम्प्लीटली काउ बेस्ड। तो अभी मैंने गेहूँ हम लोग उगा रहे हैं, तो उसमें इंटेंट ये है कि बिल्कुल पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, सिर्फ गाय के काउ बेस्ड हम लोग वो डालेंगे फर्टिलाइजर। देन आई विल सी, भगवान की क्या इच्छा है। हमारी छोटी बहन है, वो लोग भी ये करते हैं, दे मेक ऑल द काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली, मतलब आप पढ़िए, आप लोग, यू पीपल शुड फील, यू मतलब अगर वास्तव में सिर्फ पढ़ाई करके देखो आप लोग, मैं ये तो मतलब भक्ति से अलग मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई करके सिर्फ आप जॉब ही मत करना। मतलब ट्राई टू बी एंटरप्रेन्योर एक्चुअली। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो भी है, मतलब एट द एंड ये है कि मतलब कुछ अपने अलग से करिएगा। ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस, जिससे कि आप समाज में कुछ कर सकें। बिलीव वही 8 बजे झोला लेके पहुंच गए ऑफिस, और वहां इन लोगों ने खून चूस के बस में बैठ के फिर घर आ गए, इससे कुछ नहीं होता है इससे, बिलीव नहीं। ठीक है, मतलब हम लोग यही कर रहे हैं, बट अगर आप कुछ, मैं अपने आप को सेट, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपने आप को सिर्फ इसलिए सेटिस्फाइड फील करता हूँ ना, क्योंकि मुझे
सर ने या हमारे गुरु महाराज ने कुछ और करने को दिया है। अगर मेरे पास सिर्फ जॉब होती ना, तो बिलीव मी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया होता। बट मेरे पास जॉब के अलावा कुछ और करने को है, इसलिए मैं जॉब को टॉलरेट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मेन तो मेरा लाइफ दूसरी है, तो इसलिए जॉब को भी मैं अच्छी तरह करता हूँ, बट आई नो दैट देयर इज समथिंग एल्स आई हैव टू रियली पुट इनटू दैट। तो मैं एग्रीकल्चर में करना चाहता हूँ। आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि ट्राई टू यूज योर ब्रेन फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर द नीड ऑफ द आवर। सिर्फ नौकरी करने से नहीं होगा, बिलीव मी। बाद में बड़ा पछतावा होता है एक्चुअली, जब आप 40s के हो जाते हैं ना, फिर उसको लगता है अभी तो यही लाइफ जीनी है। और फिर मान लीजिए, और जहर खा रहे हैं हम लोग हर इसमें, चाहे आप घी देख लीजिए, हमको लगता है हम अमूल का घी मतलब ठीक है वॉटेवर, तो हम लोग को लगता है ये चीज़ें शुद्ध नहीं है, ये चीज़ें मतलब उतनी शुद्ध नहीं है। अगर आप घी बनाने का प्रोसेस देख लें, आप जो हमारा वैदिक प्रोसेस है, कोई मतलब बहुत रेयर आपको मिलेंगी चीज़ें इस तरह की, वेरी रेयर। दूध से घी दही बनाना, दही से मक्खन बनाना, उसको दे आर वेरी एवरीथिंग हैज़ गॉट अ नॉलेज। मतलब ऐसे चीज़ें हवा में नहीं हो रही हैं। तो एंड I know some of you are smiling, but believe me, this is a very serious thing actually. That I will say that please use your innovative bent of mind, that if you can do some innovation there, it will be really helpful to the society. And I remember one of the professor, his name is Dr. B.B. Shenoy. He was Vijay B. Shenoy. I don't know. Most of you might not be knowing him. He left IIT Kanpur when I was in second year. So I took one of his course. He was mechanical engineering assistant professor at that time. Now he's in ISC Bangalore. And so at that actually that year he left IIT and then he went to ISC. And while he was going, and I had a discussion with him, few of the students, we liked him a lot. And he told us that act in a life. So I remember him, it was good. He said like, we asked him like, what suggestion would you like to give to all the students? He said, yeah, please act in life in such a manner that clearing IIT JEE does not become the biggest achievement of your life. So that was a very good line actually, he said. So at least I know many of my friends are acting in this way, that they have even much more achievements. At least I got opportunity to act in a way so that I don't even remember now what was my rank in JEE. So I don't remember it, because that was not one of the biggest achievement. That was one of the achievement, but not the biggest achievement at least. So this is important. Act in a manner that it does not becomes your biggest achievement, that your JEE rank. आपको सिर्फ वही ना बताते रह जाएं आपकी मेरी IIT JEE में इतनी रैंक आई थी, और बड़ा करना है जीवन में। और तो इस इंटेंट के साथ मैं एग्रीकल्चर में कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। लेट अस सी हाउ मच सक्सेस आई गेट, बट दिस इज समथिंग। आप लोग भी, मैं इसी के इस क्वेश्चन के आंसर में मैं भी बोलना चाहूँगा, प्लीज आइडेंटिफाई सम फील्ड वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, एंड सो दिस विल बी ऑलवेज वेरी satisfying actually. So yeah, Thanks a lot, Prabhu. It yeah, was thank really you very much. inspiring. Yeah. So if anyone has any other question, maybe you can quickly ask. A very nice opportunity we have. All right then, thank you very much Yes. everyone. Thanks a lot, and I wish all of you best of luck, and I wish that all of you will understand this message of our scriptures, take it to your seriously to your life, and that way, like you'll give a real meaning to your life and become a really successful person. So my best wishes for that. Thank you very much everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna.